Hello, 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 hello. Am I audible? Um, okay, so today we are going to do some discussions for ISI, the upcoming ISI exam, as well as the CMI exam. Hi, Arun. Can you please start solving sessions? Yeah, I guess I was also thinking about that, and I did actually mention that in the last stream that we will be starting some sessions on problem solving, specifically for both JE Advanced and this ISI and CMI type of exams. So, okay, so by the way, आवाज आ रही है ना? I hope it's clear and at least audible. If not, please let me know. Okay. And in today's session, आपको जो भी doubts हैं regarding ISI के questions, कोई particular topic, do ask me. And मैं अपने तरफ से भी कुछ questions लाया हूँ, which we can discuss and we can learn a few things here and there. And if everything goes good, I think we will be having, regular live sessions जहाँ पे हम discuss कर पाएंगे problems. एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो टुडे स्पेसिफिकली हम आईएसआई टाइप चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिकली अबाउट द एग्ज़ाम भी कि उसमें क्या करना है कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए एंड द नुआंसेस ऑफ द एग्जाम्स ओके ऑल्सो समवन इन चैट कोई भी बताना कि इफ इट्स ऑडिबल और नॉट आई एम नॉट चेकिंग इट मैनुअली तो आवाज़ आ रही है ना सही से मुझे एक बार बस चैट में लिख दो एंड मीनवाइल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ तब तक जो आई होप अच्छे होंगे। तो फॉर एग्जांपल आईएसआई 2020 में देयर वाज अ क्वेश्चन आईएसआई 2020 देयर वाज अ क्वेश्चन इवन आज मैं एक स्टूडेंट के साथ सेशन में ये डिस्कस कर रहा था अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक ये यूजीए में आया था एंड द क्वेश्चन बेसिकली सेज दैट 128 पीपल were seated circular in a circular fashion ठीक है मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे करके सो देयर वर लाइक 128 पीपल जो ऐसे सर्कुलर सीटिंग्स में अरेंजमेंट्स में बैठे हैं एंड नाउ ये जो लोग बैठे हैं यू स्टार्ट एक्चुअली with one but you always skip the first one you do the second one and then you skip the next and in a similar fashion you keep crossing every alternate one एंड जब आप वापस आते हो और आप वन पे वापस आते हो आप फिर टू को नहीं पकड़ोगे आप थ्री को स्किप करोगे बिकॉज हुएवर हैज बीन क्रॉस्ड आउट इज बेसिकली इनएक्टिव एंड विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट गेम द क्वेश्चन वाज कि एंड में कौन ऐसा रह जाएगा हु इज बेसिकली नॉट क्रॉस्ड हु इज स्टिल देयर तो फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो जैसे कि ये क्वेश्चन है तो वन ऑफ द वेज टू डू दिस ऑफ कोर्स आप स्मॉलर केसेस देखो आप इसको 1 2 3 और 4 के लिए देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एंड अ बेटर वे टू थिंक अबाउट दिस इज बेसिकली कि आप वन से स्टार्ट करो एंड देन यू skip one and kill two, skip three and kill four, then you go back to one, and of course you're supposed to skip one and kill three, and one is the winner because everyone else got killed, right? This is a better way to think about it. And when you keep doing this, आपको दिखेगा कि जो powers of two हैं, those powers of two basically are always getting cancelled. Okay, मतलब they always end in one. So one is always the winner, no matter जितने भी लोग हों, as long as the total number of members is a power of two. Now, why does this happen? How does this happen? इट्स अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन तो एग्जाम में जो पहली बार इसको अटेम्प्ट कर रहा है आई डोंट थिंक उसके लिए इट्स गोइंग टू बी इजी टू फिगर आउट क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है बट इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट सी द पैटर्न इन द एग्जाम बट अगर किसी को ऑलरेडी पता हो देन दे विल नो दिस इज नोन एज द जोसेफस प्रॉब्लम इसको आप कहते हो द जोसेफस प्रॉब्लम एंड देयर इज अ वेरी गुड वीडियो ऑन नंबर फाइव आई थिंक ऑन दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम जहाँ पे जोसेफस प्रॉब्लम आपको क्लियरली समझाया जाता है एंड दिस इज एग्जैक्टली द सिमिलर प्रॉब्लम एक्सेप्ट जोसेफस में आपके पास 100 लोग थे आई थिंक एंड द सेम किलिंग पैटर्न वाज फॉलोड एंड जोसेफस हैड टू फाइंड कि वो कौन से नंबर सीट पे बैठेगा सो दैट ही इज द विनर ठीक है दैट वाज द एंटायर पॉइंट ओके सो
इन द जनरल सेंस अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, द जोसेफस प्रॉब्लम या फिर आप कोई भी जनरल यहाँ पे n ले लो, तो द प्रॉब्लम स्टेट्स कि देयर आर n पीपल लेट्स से seated all around, okay? And the thing is, you need to find out कि in the process mentioned above, जहाँ पे you skip the first one, cross the second one, then skip the next available one. And by available, I mean whenever someone is not crossed, they are available. Okay. So right now three is not crossed, so they're available. And we are supposed to skip one, cross two, skip three, cross four, and all the way we come back and we keep doing it unless there is only one of them left. The question is, who is the winner? Who is going to be the winner in case of any n? Okay. This is going to be our exact question. And इसको हम जोसेफस प्रॉब्लम कहते हैं एंड लेट्स डू अ फ्यू केसेस क्योंकि ये आईएसआई यूजीए 2020 में भी आया था सो लेट्स इट्स वर्थ लुकिंग एट इट मे बी इसका कोई जनरल वर्जन इस बार आ जाए मे बी कोई ट्विस्टेड वर्जन भी आ सकता है सो वी नेवर नो एक्चुअली सो एज आई शोड इन 1 2 3 4 केस one always wins, right? So you skip one, you cross two, you skip three, you cross four, you skip one, you cross three, one is the winner. What happens if we have five members? So if you have five members, you skip one, you cross two, skip three, cross four, skip five, cross one, और यहाँ पे देखो one is not the winner, and then skip three, cross five. It seems three is the winner. So for n equals to four, the winner is basically two. For n equals to five, the winner is basically three. What happens if you get it to six? Let's say, okay, let's see, one, two, three, four, five, six. So skip one, cross two, skip three, cross four, skip five, cross six, skip one, cross three, and then you simply have skip five, cross one, I think. Yeah. So I think five is the winner for n equals to six. So why are these different numbers suddenly appearing out of nowhere? One is not the winner anymore. And this is curious because क्या इसमें कोई पैटर्न है? क्या हम कोई पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं? So, for those of you who actually want to just know the answer and to figure out the solution, I would give you, I would basically suggest you to try to figure out the logic yourself, घर पे बैठ के. But the solution is very interesting. ये solution ऐसे निकलता है कि मान लो आपके पास n number of people हैं, okay? And once you have these n number of people, you should be able to see that, let's say in n, you have to write n in binary. So, for example, let's take 5, okay? Let's take 5. And once you have these 5 n equals to 5, you have to write this in binary. और इसका binary form कैसे आएगा? So, of course, 5 can be written as 2 square plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. Correct? और ये जो coefficients हैं 2 के, these are the ones we are going to use. So, how much do we get? 1, 0, 1. This is the binary representation of 5. Now, in the case of n equals to 5, we did see that 3 was the winner. और जो भी ये binary representation आपके पास आएगा, you just have to take the first digit where 1 appears. So, from the left hand side, the first one that appears, delete that and write it at the very end. So, the resulting number should be 011. And whichever this number is, this is your answer. सो बहुत ही क्यूरियस इंटरेस्टिंग सिंपल टेक्निक है और अगर आप ये 011 को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आप राइट से लेफ्ट जाओगे राइट तो 1 इंटू टू टू दावर 0 प्लस 1 इंटू टू टू दावर 1 ऑफ कोर्स 0 को हम काउंट नहीं करेंगे सो इट्स बेसिकली 11 एंड इफ यू काउंट दिस इज बेसिकली 3 3 is indeed the answer for n equals to 5 right so this entire this entire sequence actually proves that आप n equals to 3 n equals to 5 whatever it is आप कोई भी वैल्यू के लिए ये निकाल सकते हो करेक्ट यू कैन ऑब्वियसली फाइंड इट फॉर एनी वैल्यू n नाउ आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे दैट इज कंप्लीटली ऑन योर ओन चॉइस कि आप इसको एक्चुअली लॉजिकली कैसे समझाओगे यू कैन ट्राई डूइंग इंडक्शन यू कैन ट्राई मे बी maybe trying to use some sort of
बाइनरी लॉजिक एज वेल. इन जोसेफस केस उनका वैल्यू था 100, I think. He 100 people were there and he has to find ki which seat he does he sit, which seat does he choose so that वही अंत में विनर डिक्लेयर हो जाए और बाकी सब यहाँ पे sword fight में they were killed. Now for 100, first we have to write 100 in binary. Okay, so if you were to write 100 in binary, you have to understand ki what is the highest part of 2 that we can get in 100. So let's try that. 64. And then can I add a 32 here? I think we can because that is going to be 96, right? 64, 32. Can I add a 16? I can't. Can I add a 8? I don't think we can because we have 4 left. Can I add a 4? I can. So now, what does this give me? This gives me 2 to the power 6 plus 2 to the power 5 plus 2 square and that is it. अब आपको यहाँ से ये जो टोटल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बना, इसको आप बाइनरी में जो लिखोगे ये आ जाएगा 6 के लिए 1, 5 के लिए 1, 4 के लिए 0, 3 के लिए 0, 2 के लिए 1 and then you should also have let's say 1 के लिए 0 and then 0 के लिए 0. This is going to be a binary representation, right? अब जो हमने सीखा the algorithm to find the answer for the Josephus problem, it's basically that you need to take the first leading one and put it at the end. तो जो resulting answer होगा that should look something like this 001. And now when you calculate this binary number back into a decimal form, this should be 1 into 2 to the power 0 is 1. So this is 2 to the power 1, this is 2 square, this is 2 cube, which is 8. This is 2 to the power 4, this is 2 to the power 5, and this is 2 to the power 6, which is 64, I think. Something like that. And whatever this is going to be your answer. Okay. So the Josephus problem is very interesting in this sense that you actually can solve all of this and all of these problems, these kind of problems just using induction. तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास. तो कोई एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन 2. Okay. Question 2 should be, let's say, एक इंटीग्रल आया था 0 to infinity sin of x square upon x. Okay, and again, this is one of those integrals जहाँ पे आपको यूज करना है, लेट्स से कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए जहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली इंटीग्रल कहाँ पे मेरे को लीड कर रहा है, अदरवाइज इट्स नॉट रियली पॉसिबल. ऑफ कोर्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम वुड बी टू सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख रहा है नीचे एक्स है. एंड इफ आई वांट आई कैन राइट दिस एज 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, and ऊपर नीचे if you multiply an x it becomes x square, and if you take a 1 by 2 outside this simply becomes 2x dx. Okay, and now sine of x square upon x square multiplied by 2x dx. Now how would you substitute this? If you take x square as t, this is going to be dt, correct? And limits आपके same रहेंगे, so you're basically having 0 से infinity sine t upon t, correct? Sine t upon t dt. नाउ दिस इज योर इंटीग्रल, एंड ये इंटीग्रल एक बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, सो आपको बस इसका वैल्यू पता होना चाहिए. दिस इज पाई बाय 2 एंड आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4, करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए. एंड बाय द वे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना इट्स आल्सो इजी इफ यू नो Feynman's trick of differentiation under the integral sign. It's also available on the channel, तो आप इसको देख लेना एक बार कि how to do sin x upon x का integration from 0 to infinity. So that's basically one of the integral questions. और जहाँ तक बात है कि ऐसे में यूजुअली क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा पैटर्न की बात करता हूँ. तो यूजीए जब पेपर है आपके पास, उसमें यू विल हैव 30 क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इफ यू डोंट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन यू गेट +1.
If you get a question correct, you get +4, and if you get a question wrong, you get nothing, basically, -0. Nothing is subtracted from your score. And usually 80 is going to be a very good mark, and it will usually clear you the cutoff. And it's very important to clear the cutoff, because otherwise your next paper, which is UGB, that will not even be checked. So it will not be graded if you do not cross whatever cutoff UGA has. So that means that you have to cross this 80 cutoff. And to do that, you need to get at least 18 questions correct, right? Minimum. If you get 18 questions correct, and even if you leave the rest, it's all good, because you get then, how much? 84 or something, which is good, which is a good marks, a safe side mark. 80 plus is very good. Now, to do these kind of questions, UGA में जो pattern follow होगा, the pattern basically depends that there would be a lot of questions directly from the formula sheets with a little bit of twist. So 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे पूरे पेपर में, distributed somewhere, which you would be able to do easily. But the rest of the questions, those will require some sort of creative imagination, some formula bending. Let's say आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहाँ पे आपको AMGM के साथ कुछ और पंच करके दिया जाए. तो मल्टीपल कंसेप्ट्स को एक क्वेश्चन में पंच करना इज वन ऑफ द कॉमन थिंग्स. So I think we will do a lot of UGA papers coming in the coming sessions. And for UGB, of course, UGB is going to be the tougher part. यहाँ पे आपके पास 8 questions होंगे, and considering that you have cleared the cutoff of UGA, ये जो 8 questions हैं, in these 8 questions you need to be able to make sure that you solve at least, let's say, 3 to 4 completely. So 1 or 2 questions out of these 8 questions are going to be doable. Okay, these are going to be doable. You would be able to do those 2 questions, but the rest of them, most probably, if it's not a very hard paper, 6 or 7 questions out of these 8 questions are going to be very hard. So 1 or 2 easy, but the rest 6, 7 of them would be hard, and they will comprise of topics like combinatorics. So I'm not only talking about key permutation combination वगैरह वगैरह, but actual combinatorics जहाँ पे you would be tested on very critical concepts, or NT, which is number theory, would also be tested जहाँ पे you might be given a Diophantine equation, some prime numbers, maybe some divisor thing. It could be anything. बट ये दोनों टॉपिक्स 101% आएंगे. ज्योमेट्री 100% आएगा, बी इट कोऑर्डिनेट और यूक्लिडियन, दोनों में से कोई भी आ सकता है. एंड अगर कोऑर्डिनेट आया तो मे बी इट वुड बी अ बिट इजी, बट अगर यूक्लिडियन आता है, सो इट माइट नॉट बी दैट इजी. So geometry would be there, combinatorics NT, and of course algebra and calculus would cover the rest of them. Calculus से, as it is seen that calculus से हमेशा 2 question आ जाते हैं, and it's very hard for people usually to actually actually do these 2 questions with proper logic and justification. बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आप जो भी जस्टिफाई करोगे, if that is not sufficient, you are not going to get marks. Okay, you might end up with a 2/10, even with the correct answer and everything. If you have not justified maybe a very critical step where, let's say, you have differentiated a function which looks differentiable, and differentiating is the correct way, and you also got the correct answer, but you never proved it was differentiable, you might be ending up getting 2/10 for that question. So ऐसे छोटे छोटे कुछ nuances हैं. तो anyway, we will discuss that soon. And so that's what I wanted to just convey in this session, कि कुछ कुछ ISI के papers हम करेंगे, and in those ISI and CMI papers, hopefully enough practice मिल जाएगा, जो भी इसको इनको देखेगा, study करेगा, to face the UGA and the UGB papers, and also the MCQ and the subjective parts of CMI exam. ठीक है. So hopefully we will start from this week and have, like, let's say, 40 to 50 questions per day. That should be the target. 40-50 targeted questions for ISI. And if J Advanced comes along, we may be doing it for J Advanced as well. So this is our target in every session, to do 40 to 50 good questions. Learn all of those questions. उनमें जो concepts हैं, जो theory है, जो भी apply हो रहा है, everything.
Okay, with that in mind, that should be this for this session. एंड अगले सेशन में मिलते हैं. आई विल अनाउंस, तो जिनको भी टाइम मिलेगा दे कैन जॉइन, एंड दोज हु आर गिविंग आईएसआई should definitely join, and others, that's up to them.